Bismillahirrahmanirrahim. We have been studying Biographia Literaria, and in Biographia Literaria, so far we have done a lecture on imagination and fancy. Today's lecture, again from Biographia Literaria, is about Wordsworth's literary criticism, literary criticism of Coleridge on Wordsworth, which can also be referred to as Wordsworth as a critic, or you can say that in this lecture we will discuss the points with which Coleridge agrees, that is, agreement with Wordsworth, and the points with which he does not agree, so that would be the disagreement with Wordsworth. And all this description is found in Biographia Literaria. So, this is today's lecture, Wordsworth's literary criticism, or Wordsworth as a critic, or agreement of Coleridge with Wordsworth and disagreement of Coleridge with Wordsworth. This is the topic for today. However, as an introduction, we can start from here. We know that Coleridge and Wordsworth were close friends, and they were a kind of neighbors. They lived in one place, Lake District, and they used to have different discussions about literature, about philosophy, and about art. So they used to discuss different topics. We also know that Coleridge himself was a kind of scholar, also a philosopher, and a very great talker. Therefore, most of the conversation or the talking was done by Coleridge when they used to discuss things. But Wordsworth was not a philosopher type of person. The touch of that philosophy he actually got from Coleridge. So they would do this conversation. Most of it was done by Coleridge, and they used to discuss, as I said, art, literature, and also philosophy. Then they decided to publish lyrical ballads. The first edition was published in 1798. The second edition was published in 1800. The program of these two was this, that it was decided that Coleridge will talk about the supernatural things, and he would try to make these supernatural things appear familiar and convincing, and that he would create the willing suspension of disbelief. I'll talk about this willing suspension of disbelief, though it's not included in second semester's course, but however, this is also one of the major points in Biographia Literaria. So this was the thing which was given to Coleridge, that he would discuss the supernatural things in his poetry, but he would try to make them natural, to make them familiar, to make them convincing. The contribution of Coleridge was not very great. He just contributed 5 poems. The rest of the poems were contributed by Wordsworth. So Wordsworth was to write about the natural things, Coleridge about the supernatural things. Wordsworth was to write about the natural things, but he had to make the natural things appear supernatural. So he had to give a touch of splendor and wonder. To give the touch of splendor and wonder means that he would make them and appear, he'd make them as if they were supernatural. So the natural scenes, the natural objects, and the natural phenomena, these were given to Wordsworth, and that he would give them the splendor and the wonder, that is, the supernatural touches. As a result, they published lyrical ballads. The first edition was published in 1798. The second edition was published in 1800, after 2 years. And during these 2 years, these two great poets, they developed differences, and they were no more in speaking terms. They would not talk to each other.
And in Biographia Literaria, Coleridge tells us that he did not agree to all the points discussed in the preface to the second edition. Um, though it is said that both of them collectively produced this lyrical preface to lyrical ballads. Of course, they did. The lyrical ballads was a joint effort. However, this um, by in Biographia Literaria, Coleridge tells us that he did not agree to most of the points in the preface to given in the preface to lyrical ballads, the second edition, and he did agree to some of them. So, as I said, the main topic is the agreement and the disagreement. So, first we would discuss the agreement with Wordsworth, which are not many, and then we will discuss the disagreement, which are important and many. Coleridge tells us that there are many things to which he did not agree. There are some to which he did agree. And we come to the conclusion later on that he combined the best in the old. Old refers to the new classical. The best in the old was the use of meter, the use of diction, and he combined the best in the old with the best in the modern. The modern refers to romantics. Romantics believed in imagination and passions, and these two were combined by Coleridge. We know that Wordsworth completely did away or left uh, with the old theory of poetry, the use of diction, etc. But however, Coleridge combined these two. The first thing to which Coleridge agrees is the philosophy. The philosophy on which Wordsworth had based the concept of his poetry. By the philosophy, he means three things. First of all, the philosophy, as we know, and we have discussed it in discussing Wordsworth's preface to lyrical ballads, um, that Wordsworth believed that there is a spirit behind the nature, that behind every tree, behind every river or ocean or whatever the natural thing is, it has a spirit behind it, and this spirit also is found in human beings, and therefore we are connected with each other. The nature and the human beings, they are connected. The second thing by the philosophy with which Coleridge agrees is the use of imagination and passions. We know that the Romantics believed in imagination and passions, while imagination and passions were considered as hurdles in the way of reality by the neoclassical writers. This is the second meaning of the word philosophy. The third meaning is Wordsworth believed that nature has a healing effect, that it heals you, it makes you happy. This was his belief. And in the beginning, Coleridge agreed with this, though later on he disagreed, he changed this idea, and in his Dejection and Art, his idea differs from this idea. However, up until this point, he agreed with Wordsworth. So you see, our point is that Coleridge agrees with Wordsworthian philosophy, and with Wordsworthian philosophy refers to the spirit behind the nature, the imagination and passions, which were considered great in Romantic age, and the nature, which was considered as having a healing effect. This idea was later on changed by Coleridge. ये ज़रा उर्दू में भी सुन लें. हमने इंट्रोडक्टरी तौर पे ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन तो नहीं है. बेसिक इंट्रोडक्शन में तो ये भी आना चाहिए था कि इस नाम का क्या मतलब है वगैरह. मैं इस पर शायद अलग से बनाऊँ. आपका कोर्स बहुत लंबा है तो आप नहीं कवर कर सकते, इसलिए हम मुख्तसर इसको कर रहे हैं. एज एन इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि
कॉलरेज और वर्ड्सवर्थ हमें पता है ये क्लोज फ्रेंड्स थे, नेबर्स भी थे, हमसाए भी थे, और ये आपस में डिस्कशन करते थे, घूमते फिरते थे। और कॉलरेज जो है ये फिलोसोफर टाइप, स्कॉलर टाइप बंदा था, टॉकर था, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन करता था। जबकि दूसरी तरफ वर्ड्सवर्थ वो फिलोसोफर टाइप नहीं था, बल्कि कॉलरेज से ये टच उसको गया है, और ये आर्ट को, लिटरेचर को, फिलोसफी को ये आपस में डिस्कस करते थे। फिर हमने पढ़ा है वर्ड्सवर्थ प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स में कि फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लिरिकल बैलेड्स लिखेंगे, और इन्होंने लिखे और पब्लिश किया फर्स्ट एडिशन को। और प्रोग्राम इनका ये था कि कॉलरेज ये करेगा कि ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स लेगा और उसको नेचुरली पेश करेगा। इसके बरक्स वर्ड्सवर्थ नेचुरल चीज़ें लेगा और उसको सुपर नेचुरल के तौर पे पेश करेगा। ये सिंपली तो यही है। हम ये भी कह सकते हैं कि कॉलेज का प्रोग्राम ये था कि ये सुपर नेचुरल लेगा, उसको फेमिलियर और कन्विंसिंग अंदाज से, ताकि आप आमादा हो सके, पेश करेगा। और वर्ड्सवर्थ नेचुरल चीज़ों को पेश करेगा और ऐसे पेश करेगा जैसे वो सुपर नेचुरल किस्म की चीज़ों, उस पर स्प्लेंडर और वंडर और ब्यूटी डालेगा सुपर नेचुरल की, और डिस्कस करेगा सीन, ऑब्जेक्ट्स और फिनोमेना को। तो यूँ इन्होंने 1798 में पहला एडिशन शाये किया और 1800 में दूसरा एडिशन शाये किया। इस दूसरे एडिशन का जो प्रेफेस था वो बहुत एलेबोरेट था, और आप देख सकते हैं ये इन दोनों के दरमियान 2 साल गुजरे हैं। तो ये 2 साल जो बीच में थे, इनकी आपस में लड़ाई हुई और इन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो इसने जो कुछ भी लिखा, तो ज़ाहिर है चूँकि ये जायंट चीज़ थी, तो इसको एट्रीब्यूट किया जाता था कि कॉलरेज का भी यही ख्याल है। लेकिन बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलरेज हमें बताता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसके साथ वो एग्रीड नहीं है, और ये हमारा ये टॉपिक है। पहले एग्रीमेंट वाली चीज़ें और फिर डिसएग्रीमेंट वाली चीज़। तो कॉलरेज का तो अच्छी बात उसकी ये है कि इसने ओल्ड को और न्यू को कंबाइन किया। ओल्ड से मुराद न्यू क्लासिकल से उसने लिया। न्यू क्लासिकल का तो खिलाफ है, वो तो ठीक है, लेकिन न्यू क्लासिकल में जो अच्छी चीज़ है, डिक्शन का यूज़ या मीटर का यूज़, इसको कंबाइन किया मॉडर्न के साथ, यानी रोमांटिक के साथ, जो इमेजिनेशन और पैशन है। वर्ड्सवर्थ जो है इसने तो बिल्कुल डिक्शन का जो प्रोग्राम था उनका बिल्कुल ही उसको डिसमिस किया था। तो पहला पॉइंट जिसके साथ वो एग्री करता है वो है वर्ड्सवर्थियन फिलॉसफी। वर्ड्सवर्थियन फिलॉसफी और कॉलरेजियन फिलॉसफी ये दोनों एक हैं, कम अज़ कम बिगिनिंग में चंद पॉइंट्स। तो फिलॉसफी से मुराद ये 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि वर्ड्सवर्थ का ख्याल ये था कि नेचर के पीछे एक स्पिरिट है, और यही स्पिरिट इंसानों में भी है, दरख्तों में भी है, ओशन में भी है, रिवर्स में भी है, लिहाजा हम कनेक्टेड हैं नेचर के साथ। एक तो फिलॉसफी से ये मुराद। दूसरी मुराद फिलॉसफी से इम्पॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड पैशन, जज्बात और तखयलात की अहमियत, ये दोनों रखते थे कॉलरेज भी और वो भी। और ये हमारा सेकंड पॉइंट भी होगा असल में, इमेजिनेशन और पैशन वाला। आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं ये समझाने के लिए कि फिलॉसफी से क्या मुराद है। और तीसरी बात ये थी कि वर्ड्सवर्थ का ख्याल ये था कि नेचर हमें हील करता है, हमारी ज़ख्मों पे मरहम रखता है। कॉलरेज का ख्याल और हमें खुश बनाता है। तो कॉलरेज का शुरू में तो यही ख्याल था कि ये हमें खुश बनाता है, लेकिन फिर उसने डिजेक्शन एंड ऑड नज़र लिखी और उसमें इसने बताया कि ये उसका भी आइडिया नहीं है, बल्कि हम या खुश होते हैं या गमगीन होते हैं, तो हम ये अपना खुशी और गम नेचर को ट्रांसफ़र करते हैं। लिहाजा अगर बुलबुल आवाज़ें लगा रहा है तो खुश हाल आदमी के लिए वो गाना गा रहा है, अगर कोई गमगीन है तो फिर वो रो रहा है। तो ये हम पे डिपेंड करता है। दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट विद विच कॉलरेज एग्री। The second point is that Coleridge agrees with Wordsworthian view that poetry is the product of passions and imagination. We also discussed this point here
It can be taken as a separate point. Passion and imagination, these were given a lot of importance, and imagination and fancy, they were redefined by Coleridge as we have discussed it in the previous lecture. So poetry, according to Wordsworth, was the product of passions and imagination. And this is with what Coleridge also agrees. This idea is contrasted with the classical idea. They did not believe in passions and imagination, and they believed that these two are hurdles in the way of reality, and they are hurdles for the poet. This is the second point. दूसरा point ये है जिसके साथ कॉलेज एग्री करता है कि पोइट्री जो है ये प्रोडक्ट है पैशन और इमेजिनेशन की, ये वर्ड्सवर्थ का आइडिया है और कॉलेज इसके साथ एग्रीड है। न्यू क्लासिकल आइडिया आपको पता है ये नहीं है, उनका ख्याल ये था ये दोनों ये रुकावट है पोइट के लिए और पोइट्री के लिए। The third point of agreement is that Wordsworth believed that poetry is the expression of fundamental laws of nature. What are the fundamental laws of nature? These are the difficult words. The easiest explanation is that the laws of nature are all the good laws. For example, the law of love, the law of sympathy, the law of empathy, the law of humbleness. All these are the laws of nature. Wordsworth believed that poetry is the expression of these fundamental laws of nature, these fundamental emotions, emotion of love, emotion of sympathy, humbleness, and empathy. So this is what he believed. And Coleridge agreed with this, that human laws and the laws outside in nature, they are the same. As we have discussed earlier, that there is a spirit in us, there is a spirit in the nature, and both these spirit are the spirit of God. So we are connected with God on the one hand, with nature on the other hand. All of us are connected. Human beings are interconnected. They are interconnected with nature. They are connected with God as well. So this is what he means by the fundamental laws of nature. ये तीसरा पॉइंट है जिसके साथ कॉलेज एग्री करता है कि वर्ड्सवर्थ का ख्याल ये है कि पोइट्री जो है ये फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर की का एक्सप्रेशन है, ये सारे ख्याल है। और फंडामेंटल लॉज से मुराद हैं मोहब्बत, सिंपैथी, एम्पैथी, जितने भी इमोशन जज्बात हैं जो अच्छे हैं, इनसे लॉज ऑफ नेचर मुराद है। और ये लॉज ऑफ नेचर इंसान में हो या बाहर नेचर में हो, दोनों एक हैं क्योंकि दोनों में एक ही स्पिरिट घूमता है। दिस इज द थर्ड पॉइंट विद व्हिच कॉलेज एग्रीज। The fourth point is Wordsworth said that genuine passions are very important in poetry, and that there must be genuine passions in poetry. Now, genuine, the word genuine is, as we know, contrasted with the word artificial. And the word artificial was applicable to New Classical age. So you see, when he talks about the passions, the genuine passions, he also has in his mind the passions of the New Classical age, which were not genuine, which were artificial passions. They expressed the artificial passions in their poetry, but he believed that there should be genuine passions, and these genuine passions should be extracted and taken from the real experiences. If somebody has passed through an experience and he has that emotion of that experience, then that experience is the genuine experience. And then again, these emotions should be conveyed in poetry with sincerity and honesty. These two things again were missing in the new classical age, the sincerity and the honesty, both of them. ये चौथा पॉइंट है जिसके साथ वो एग्री करता है। और चौथा पॉइंट ये है कि जो पैशंस हैं पोइट्री में, ये ओरिजिनल और असल होने चाहिए, ये दो नंबर नहीं होने चाहिए। जिस तरह की न्यू क्लासिकल एज में था, जेन्युइन पैशंस नहीं थे। रैप ऑफ द लॉक आपने पढ़ा है, तो जेन्युइन पैशंस पे डिपेंडेंट नहीं है। और ये जो पैशंस हैं
रियल इंसिडेंट से, रियल एक्सपीरियंसेस से माखूज हों, और अगर आप इसको कन्वे करते हैं एज अ पोएट तो ये इखलास के साथ और ऑनेस्टी के साथ कन्वेड होने चाहिए. So this was the fourth point with which he agreed. The fifth point is with which he agrees that there should be a reform of the poetic diction of the new classical age. Wordsworth said there should be a reform, and Coleridge agrees. Coleridge agrees with this fact that the figurative language was used only for ornamental purposes in new classical age. They used figurative language, diction for ornamentation. It was not the integral part of poetry. It was for the sake of ornamentation. Therefore, it was not natural for them to use it. The natural thing would be that if someone is very passionate, he would use a figurative language naturally. But as these people did not believe in passions and emotions, their passions and emotions were not original or genuine, and as a result, this type of diction which they used needed a kind of reform. And Wordsworth was in favor of this reform, and Coleridge was also in favor of this reform. The reform refers to the fact that there should be a harmony between the matter and the manner, between the content and the style with which it is expressed. And the neoclassical used grand style for petty incidents, for petty occasions. ये पांचवा और आखिरी जो पॉइंट है एग्रीमेंट का वो ये है कि जो वर्ड्सवर्थ था उसका ख्याल ये था कि न्यू क्लासिकल जो पोएटिक डिक्शन है वो इस्तेमाल हुआ है ऐसी चीज़ों के लिए जो ज़्यादा पैशनेट नहीं है. अगर इमोशन नहीं है और आप बड़े बड़े डिक्शन यूज़ करते हैं तो दोनों में हम आएंगे नहीं. लिहाजा ये पोएटिक डिक्शन जिसको फिगरेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं इनमें आपस में हम आहंगी होनी चाहिए. और अगर ये हम आहंगी ना हो तो इसका मतलब ये होगा कि ये आर्टिफिशियल यूज़ है और ये फिगरेटिव लैंग्वेज जो है सही इस्तेमाल नहीं हुआ है. तो विदाउट एनी रियल इमेजिनेटिव ट्रूथ अगर इस्तेमाल किया जाए लैंग्वेज को तो ये लैंग्वेज ठीक नहीं होगा. तो ये 5 चीज़ें हैं जिसके साथ वो एग्री करता है. हम इसको रिपीट करते हैं. पहली चीज़ जिसके साथ वो एग्री करता है वो वर्ड्सवर्थ की फ़िलॉसफी है और फ़िलॉसफी से ये 3 चीज़ें मुराद हैं. दूसरी चीज़ जिसके साथ कॉलेज एग्री करता है वो ये है कि पैशंस और इमोशंस, इमेजिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरी चीज़ जिसके साथ वो एग्री करता है वो ये है कि पोइट्री फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर को एक्सप्रेस करती है और फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर से बेसिक इमोशंस मुराद हैं. चौथी चीज़ जेन्युइन इमोशंस इंपॉर्टेंट है पोइट्री में जो रियल एक्सपीरियंसेस पे डिपेंडेंट हो. पांचवी चीज़ ये है कि रिफॉर्म होना चाहिए पोएटिक डिक्शन में, न्यू क्लासिकल ने का मैटर और मैनर ये हारमोनियस नहीं था और इसने जो लिखा वर्ड्सवर्थ ने तो ये हारमोनियस था. ये एग्रीमेंट्स की बातें हो गई. The next point is the discussion of disagreement with Wordsworth, and this is also very important. There are many points to which Coleridge did not agree. The first point is Wordsworth believed that the content of poetry should be taken from village life, that it should be about the villagers, and that the villagers and the things of the village they are the best subjects for poetry, and poetry should be about them because these were the people who were very close to nature and their passions um, had coexistence in simplicity. I have explained this point while discussing Wordsworth, so if you feel difficulty in this area, please listen to the lectures on Wordsworth Preface to Lyrical Ballads. You will then understand what is meant by the coexistence in simplicity. Uh, he said that the essential passions of heart they coexist in simplicity. That is, the passions of the villagers are not many. Therefore,
they are a few, and a few things can coexist in simplicity. The second thing he believed that these people communicate very effectively with each other, the villagers, and therefore they are fit. He also believed that the actions they perform, the actions of the villagers, they actually germinate, they come from the essential passions of heart. The essential passions of heart refers to the passion of love. All these good emotions and passions are the essential passions of the heart. He also said that these people are surrounded by beautiful scenery, beautiful objects, and they look at these objects, the beauty of these objects go deep into their hearts, and their thoughts become beautiful because of the beautiful surrounding. Coleridge does not agree with all this discussion. He thinks that if we study Wordsworth's best poetry, Wordsworthian best poetry is not about the common folk of the village. So this is his first objection, that he himself wrote poetry, and most of his poetry is not about the villagers, and the language used is not the language of the villagers, and the subject matter is also not like that. So is his own poetry is not in accordance with his poetic theory. This is his poetic theory, that you can take the subject matter from the village. Even you talk about the villagers, you make poems about them, and the reason is that they are surrounded by beautiful scenes, they communicate effectively, and their passions of the heart coexist in simplicity. All these points, as I said, have been discussed in the previous lecture on Wordsworth's preface to lyrical ballads. The objection is that most of Wordsworthian poetry itself doesn't follow whatever he has said. This poetic theory is not followed even by Wordsworth himself. So when he tries, he doesn't follow all these rules himself, but when he does, his poetry becomes very trivial and it suffers from triviality. So his own poetry becomes less important and not that beautiful poetry when he follows his own poetic ideas of poetic theory. ये पहला डिसएग्रीमेंट है, ये तो हम पढ़ चुके हैं वर्ड्सवर्थ के प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स में, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं कि उसका ख्याल ये था कि विलेजर्स जो हैं इनके बारे में लिखना चाहिए, ये असल मौजू है पोइट्री का विलेजर्स और विलेज के चीज़ें, क्योंकि ये जो लोग हैं इनका ताल्लुक नेचर के साथ ज़्यादा है और इसेंशियल पैशंस ऑफ द हार्ट इनकी को एग्जिस्टेंस है सिंप्लिसिटी में। इसेंशियल पैशंस ऑफ द हार्ट से मुराद, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इससे मुराद है जितने भी अच्छी इमोशंस हैं या पैशंस हैं, और ये कि ये इनकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है आपस में, और इनकी जो पैशंस हैं ऑफ द हार्ट ये पैदा होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, इनके एक्शंस जर्मिनेट होते हैं इन पैशंस ऑफ द हार्ट से, जो कि बड़े अच्छे हैं। लिहाजा ये लैंग्वेज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये सब्जेक्ट मैटर। और नेक्स्ट वजह ये भी है, वर्ड्सवर्थ कहता है कि इनके इर्द गिर्द जो सीनरी है बड़ी ब्यूटीफुल है, तो ये इनके दिमाग में जाती है, इनके थॉट्स भी ब्यूटीफुल। और कॉलेज एग्री नहीं करता। कॉलेज का ख्याल ये है कि जब भी वर्ड्सवर्थ ने अपनी थियोरी को फॉलो किया है उसकी पोइट्री ख़राब हो गई है, तो इसने अक्सर पॉइंट्स में खुद भी फॉलो नहीं किया है, और सिर्फ ये विलेजर्स जो है ये फिट नहीं है। वो कहता, अगले नेक्स्ट पॉइंट में हम इसको क्लियर करेंगे कि ये जिस विलेज की बात कर रहा है तमाम विलेजेस इस तरह की नहीं है। सो दिस वाज हिज फर्स्ट ऑब्जेक्शन, एंड वी कैन से हिज फर्स्ट disagreement. The second disagreement, he gives reasons why villages and village life is not fit for poetry, because he thinks that yes, it's all right as far as the Lake District is concerned, about which Wordsworth
has talked in his poetry, says that Lake District is different from other villages, and whatever applies to Lake District does not apply to all the other villages and villages. So whatever life is there in Lake District is not there in the other villages. So there is a difference between these villages and the other villages. And what is that difference? The first difference is that these villages are independent and educated. Where does this education come from and how are they independent? Coleridge believes that these two are the plus points of the villages of the district, Lake District. These are the plus points. They are independent people and they are educated people. Now, slavery contrasted with independence destroys human dignity. So, if uh, people are slaves, then their dignity is destroyed. So, they are also not fit for poetry. On the other hand, those landlords who enjoy the labor of the poor work and they eat, the landlords. These landlords are also not good, and as a result, they are not fit for poetry. Neither are the slaves fit, nor are the landlords fit. So, who are then fit? Those who are independent and those who are educated. So, independent point is explained. We'll now explain the educated point. The people, the villagers of the Lake District, they were independent people and therefore fit. But every villager may not be independent. The next point is that Wordsworth, the area about which he talked, that is the Lake District where he lived, these people were educated. By education, he does not mean that they were PhDs and they were masters and MS. By this he means that these were the people who would listen to Bible every Sunday. And Bible is a library of knowledge. There's a lot of knowledge given there. There is history involved, there is morality involved in it, there are songs, there are parables and stories, and they can be referred to as learned villages because of listening to Bible. So therefore, they were not ordinary peasants or ordinary farmers. Whatever Wordsworth talks about these villages cannot apply to all the villages. So Wordsworth has generalized this statement. All the farmers in the Lake District were independent. So this generalization is something to which Coleridge does not agree. He does not believe that all the villages are fit for uh, the subject matter of poetry. Uh, the Lake District and the people of the Lake District was an exception, and this exception cannot make the rule. So therefore, these peasants were not ordinary peasants, and this is the second point to which he does not agree. ये जो दूसरा पॉइंट है पहले पॉइंट के साथ कनेक्टेड है. पहले पॉइंट में इसने कहा कि मैं विलेजर्स के बारे में लिखूंगा. क्यों? तो ये वजह यहाँ पे बयान होती है कि विलेजर्स और विलेज लाइफ जो है खासतौर डिस्ट्रिक्ट लेक डिस्ट्रिक्ट में ये ज़बरदस्त है. तो इसके बारे में तो ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन जब आप इसको जनरलाइज करते हैं कि सारे विलेजेस और सारे विलेजेस इनके बारे में लिखना चाहिए, तो इसके साथ ये एग्री नहीं करता कॉलेज, और वो कहता है कि जो बात लेक डिस्ट्रिक्ट में है विलेजेस और विलेज के मुताबिक वो दूसरे विलेजेस और विलेजर्स में नहीं है. तो लिहाजा ये पॉइंट जो है ये हम सब पे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक इंडिपेंडेंस और एक एजुकेशन. ये जो लेक डिस्ट्रिक्ट के पेजेंट्स हैं, जमींदार, ये कारिंदे हैं और किसान हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं और ये एजुकेटेड हैं. क्योंकि अगर स्लेव्स हों तो स्लेवरी जो है ये तो ह्यूमन डिग्निटी, इंसानी वक़ार को ख़त्म करती है, तो ये तो परफेक्ट नहीं होगा पोइट्री के लिए. और इसी तरीके से अगर हम लैंडलॉर्ड ले लें जो कि स्लेव्स तो नहीं है, लेकिन ये जो गरीब किसान हैं उनकी मजदूरी से फ़ायदा उठाते हैं नाजायज़, तो ये भी फिट नहीं है. फिर फिट कौन है?
फिट वो हैं जो इंडिपेंडेंट है, और लेक डिस्ट्रिक्ट के किसान इस लिहाज से इंडिपेंडेंट थे। तो लेक डिस्ट्रिक्ट की बात अलग है, ये जनरलाइज नहीं किया जा सकता। वर्ड्सवर्थ ने जनरलाइज किया है कि सारे विलेजेस की बात होनी चाहिए। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि लेक डिस्ट्रिक्ट के लोग जो थे ये एजुकेटेड थे। एजुकेटेड से मुराद ये नहीं कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते थे। एजुकेटेड से मुराद ये है कि वो हर एतवार को बाइबल सुनते थे, और बाइबल में हिस्ट्री के बारे में मॉरलिटी सॉन्ग्स और पैराबल्स हैं, तो इनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वो आम किसान नहीं थे, वो बाइबल जानने वाले किसान थे। तो इस वजह से कॉलेज इसके साथ एग्री नहीं करता कि तुमने पॉइंट जनरलाइज कर दिया है, सारे पेजेंट्स और किसान ये लेक डिस्ट्रिक्ट के किसानों की तरह नहीं है। The third point to which he does not agree is this: according to Wordsworth, the people living in the cities are not very honest. They are hypocrites, and whatever they say, they do not mean. Coleridge partly agrees with this, that yes, some of the people there are dishonest, and whatever they say, they do not mean. He agrees partially with it, but then he talks about the village life, that in village life too there are obstacles, and there are obstacles for a great change. These are the people who are very conservative, who are against a pleasurable and good change, and this defect is found in the villages. And when you do not want to change, your intellectual, mental development will stop. So this happens in the villages only, that your intellectual, your mental development in the villages is not that great as it is in the cities. This he refers to as a negative absence of change. There is an absence of change. There is obstacles of change in the villages, and it is something negative. And of course, the village life is extremely slow and backward. So all these negative points, if you are thinking that in urban society, that is in cities, people are not very honest, then there are also difficulties in the village life because they have resistance for the change. And this intellectual and mental development takes place only when change takes place. They are slow, they are backward, and this emotional and intellectual development is extremely slow in the villages. These are the negative points of the villages. As far as this point is concerned, that Wordsworth says that villages are surrounded by beauty, which beautifies their thoughts and minds. As far as this point is concerned, Coleridge tells us that this is important only for those people who have the awareness of this. If they are not aware of the beauty of nature, then it's not possible for them that their thoughts will be beautified. And for the awareness, the important thing is the education and sensibility. They do not have that high quality education and that high quality sensibility which is there in the city life, and they become as a result less aware of all these things. So awareness is important for that, which does not take place in the villages. This is the third point. तीसरा पॉइंट जिससे कॉलेज एग्री नहीं करता वो ये है कि वर्ड्सवर्थ के ख्याल में सिटी के लोग ऑनेस्ट नहीं होते, और वो एक किस्म के मुनाफिक होते हैं, जो कहते हैं वो उनका मतलब नहीं होता, यानी वहाँ पे मसला है। तो कॉलेज कहता है कि मसले तो विलेज लाइफ में भी हैं। मसलन विलेज लाइफ के लोग बड़े कंजर्वेटिव होते हैं, चेंज पसंद नहीं करते। अगर आप चेंज पसंद नहीं करेंगे तो आपकी मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगी, और ये नेगेटिव गैर मौजूदगी होगी चेंज की। इनकी विलेज लाइफ जो है बड़ी स्लो और बैकवर्ड हो जाएगी, और इनमें इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ये बहुत कम होगी। तो ये मसला तो इधर भी है। नेक्स्ट वर्ड्सवर्थ ने कहा कि ये लोग खूबसूरती को देखते हैं, और इसकी वजह से इन के ख्यालात खूबसूरत हो जाते हैं। कहता है टॉलरेंस के ये सही नहीं है, क्योंकि इस माइंड को खूबसूरत बनाने के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है।
और अवेयरनेस नेचर की आएगी एक्सटर्नल एजुकेशन और सेंसिबिलिटी के थ्रू। ये दोनों चीज़ें बनिस्बत सिटी लोगों के विलेजेस में कम होती हैं, लिहाजा वो इतने सेंसिबिलिटी नहीं रख सकते। तो कॉलेज इसके साथ डिसएग्री करता है। देयर इज द फोर्थ डिसएग्रीमेंट। The fourth disagreement is that we know that according to Aristotle, the poets, they do not copy the original or something which is confined to the age. Whatever they copy is something universal. This is what we have discussed in Aristotle. And they write about something which is for all times. Wordsworth says that these villages are the proper objects of poetry, and poetry should be written in their language, in the language of the villagers, because their language is best suited, according to Wordsworth, for poetry. These people speak the language of nature. That is why their language is a better language. They are uncorrupted by society, by city life. Coleridge again does not agree with this, and he says that Wordsworth has already told us that we would use or he would use the language of the villagers, but he would purify this language of whatever is gross in it, whatever is not good in that language, in the language of the villagers. So his first argument is this: Coleridge, he does not agree, and he says that if you purify the language of the villagers, then this would not remain the language of the villagers. It will become the language of the educated city people. So, therefore, a purified and made logical, if this language is made logical and purified, it will no more be the language of the villagers, it will become the language of all sensible people anywhere. It will become the language of the city people, the educated people. This is one argument. There is another argument against this. According to Coleridge, uh, the villagers, they have undeveloped and uncultivated minds. Coleridge thinks that villagers, they have undeveloped and uncultivated minds because there are cultural and intellectual lack of stimulation. Intellectually, these people do not have highly qualified people in them. They do not have any communication with such people, and culturally, they have a limited culture. So, as a result, they are culturally and intellectually less developed, undeveloped. Their minds are not very much cultivated. Therefore, their conversation, when they talk to each other, they know a lot about the Bible. So, this conversation might be drawn from their religious beliefs because they have listened to the Bible a lot. They listen to Bible every Sunday, and therefore it is not refined and cultured because it is only about religion. The language of the educated people is refined and it is cultured. So he thinks that the language of the civilized people is fit language, not the language of the villagers. Wordsworth believed that the language of the villagers is fit for poetry, but that this language is to be purified and made logical, purified of grossness. And the reply given by Coleridge is this: that their language is not very refined. The language of civilized people is highly refined. The language of highly educated people is fit language because that is highly refined. The next argument about the same point is, according to Wordsworth, the villagers communicate with the beautiful objects of the village. As we have discussed earlier, Wordsworth thinks that the villagers have communication with the beautiful objects of nature and their language is derived from that part. So, therefore, this language is beautiful. The communication with an object implies. Now, the argument against this by Coleridge is that
these people, they how can they communicate with beautiful objects, the villagers? He talks against Coleridge by telling us that communication with an object implies reflection. It needs a lot of thoughtful consideration. That thoughtful consideration, that richness of vocabulary, which is important for communication, is not there in the villages. So therefore, the language of the villages is not fit for this because the vocabulary of the rustics is poor. The vocabulary of the rustics is poor because they are not highly qualified, because they don't have that sensibility of thinking deeply about all the natural objects, which is necessary for this communication with the objects. They are not philosophers type of people, and therefore it's not possible. So they can express these villagers, according to Coleridge, the barest facts of nature. Now, their ideas and their thoughts uh, are only about the natural objects, but these objects can superficially be discussed by them. The barest facts of nature are these that they can talk about their farmery, how is farming done. They can talk about their farming. They can talk about the things they grow. The deeper thoughts and ideas, they are not there. So therefore, they are not fit for universal things. And because these universal laws, they result from reflection, from deep thoughts, and these deep thoughts are not there in the villages. So as a result, that language is not fit for poetry. So this is his fourth argument. चौथा आर्गुमेंट थोड़ा सा लंबा है और हमने पढ़ा हुआ है पहले से कि अरिस्टोटल जो है वो भी कहता है कि पोएट जो जिसका भी करता है वो यूनिवर्सल होता है और वर्ड्सवर्थ का भी यही ख्याल है कि ये जो विलेजेस हैं ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स ऑफ पोइट्री हैं क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है ये भी बड़ी ज़बरदस्त है सादा लैंग्वेज है लेकिन इसको इस प्योरीफाई करना पड़ेगा लॉजिकल बनाना पड़ेगा तो कॉलेज कहता है कि जब आप इसको प्योरीफाई करेंगे और लॉजिकल बनाएंगे तो ये तो विलेज की लैंग्वेज बनेगी ही नहीं ये तो फिर एक सेंसिबल पीपल की लैंग्वेज हो जाएगी और ये तो वो लैंग्वेज रहेगी ही नहीं दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो विलेजर्स हैं इनके माइंड्स इतने डेवलप नहीं होते और इनकी जो कन्वर्सेशन है क्योंकि उन्होंने सिर्फ बाइबल सुना है तो रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में होगी या फिर जो चीज़ें ये उगाते हैं इनके बारे में होगी तो ये इतने सिविलाइज तो नहीं है जो सिटी में रहते हैं जो सिविलाइज्ड हैं हाईली एजुकेटेड हैं उनकी लैंग्वेज फिट है पोइट्री के लिए ना कि विलेजर्स की तीसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि वर्ड्सवर्थ के मुताबिक ये जो विलेजर्स हैं ये कम्युनिकेट करते हैं ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर के साथ और यही जो कम्युनिकेट करते हैं इसी से लैंग्वेज इनकी डिराइव्ड है तो ये ज़बरदस्त है कॉलेज का एतराज़ ये है कि ये कम्युनिकेशन जो है ये तो फिलोसफर्स का काम है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ कम्युनिकेशन इसके लिए ज़रूरी है रिफ्लेक्शन सोच विचार मुराकबा और वो ये कर नहीं सकते तो लिहाजा रस्टिक लोगों की वोकेबुलरी भी कमज़ोर है क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बुनियादी हक़ाइक़ हैं नेचर की उसके बारे में बात करेंगे जो बड़े बड़े आइडियाज़ और थाट्स हैं उसके बारे में वो नहीं सोच सकते यूनिवर्सल लॉज के बारे में वो नहीं सोच सकते क्योंकि इनमें वो रिफ्लेक्शन ही नहीं है तो इस वजह से कॉलेज डिसएग्री करता है सो दिस वाज द fourth point and the fifth point is Wordsworth said that he would use the language of the common people for poetry. This was his argument, Wordsworth. Coleridge is against the use of the language of common people for poetry. Says the best is the use of metaphorical language, and this metaphorical language is not the language of the ordinary people.
This is that language which is fit for passionate expression. And this thing which is this language which is fit for passionate expression is not the language of the villagers. This is not the language of common people. The metaphorical language is not the language of the common people or the language of the villagers. It's not the language of prose. It is different from all these. So he is against this. ये जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि वर्ड्सवर्थ ने कहा था मैं कॉमन लोगों की लैंग्वेज यूज करूंगा पोइट्री के लिए। कॉलरिज के बरक्स बात करता है कि कॉमन लैंग्वेज, कॉमन पीपल की लैंग्वेज ये मेटाफोरिकल नहीं होती। मेटाफोरिकल लैंग्वेज वो है जिसमें सिमिलीज, मेटाफर्स इस्तेमाल किए जाए। तो ये लैंग्वेज कॉमन लोगों की फिट नहीं है पोइट्री के लिए। मेटाफोरिकल लैंग्वेज फिट है क्योंकि मेटाफोरिकल लैंग्वेज में आप पैशनेट एक्सप्रेशन को ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। इसमें पैशनेट एक्सप्रेशन सिर्फ मेटाफोरिकल लैंग्वेज में हो सकता है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि कॉमन लोगों की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करेगा। और जो पोएटिक डिक्शन है कॉलरिज के मुताबिक ये तो ठीक है, लेकिन इसका मिस यूज ठीक नहीं है। मिस यूज ये है कि न्यू क्लासिकल राइटर ने इसका मिस यूज किया, तो ये नहीं होना चाहिए। उनकी लैंग्वेज में और मैटर में हार्मनी नहीं था, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी लैंग्वेज मेटाफोरिकल ठीक है, आम लोगों की लैंग्वेज किधर होती है पोइट्री में, इट्स डिफरेंट। There is then the last point, last disagreement, and that disagreement is the difference between the language of poetry and the language of prose. Wordsworth believed that there is no essential difference between the language of poetry and the language of prose. Coleridge does not agree to this statement, and he takes a quotation from The Thorn, a poem written by Wordsworth, and he says that every word in this poem is not much different from the words of prose. Yes, he says it's okay. The words are the same as are used in prose, but the arrangement of the words is different. There is a rhythm in it, there is meter in it. In prose, there is no rhythm, there is no meter, there is no proper arrangement, poetic arrangement of words, and therefore the language of prose and poetry are not the same Coleridge objects. वर्ड्सवर्थ का ख्याल ये है प्रोज और पोइट्री के लैंग्वेज कोई फ़र्क नहीं। कॉलेज कहता है क्या बात करते हैं, पोइट्री की लैंग्वेज अब आप अपनी नज़र ले लें तौन, अल्फाज तो वही हैं जो प्रोज में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अल्फाज की अरेंजमेंट को देखो पोइटिक है, अल्फाज के रिदम को देखो, मीटर को देखो, ये सारी चीज़ें प्रोज में किधर होती हैं। तो कॉलेज इंटरमीडिएट रास्ता अप्लाई करता है, एडाप्ट करता है। वो कुछ वर्ड्सवर्थ के साथ एग्रीड है और कुछ डिसएग्रीड है। इमेजिनेशन और पैशंस अहम है, एग्रीड है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इमेजिनेशन पैशंस भी ठीक है, लेकिन जो डिक्शन का आइडिया है अगर इसका प्रॉपर यूज़ किया जाए तो ये भी दुरुस्त है। इसको अगर हम समराइज करें तो ये सारा लेक्चर जो है इसमें हमने एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स पढ़ी कॉलेरिज की वर्ड्सवर्थ के साथ। एग्रीमेंट्स तो हमने दोहरा भी दी। पहला एग्रीमेंट ये है कि इन दोनों की फ़िलॉसफी एक है। दूसरा एग्रीमेंट ये है कि दोनों पैशंस इमेजिनेशन को हम समझते थे। तीसरा एग्रीमेंट ये है कि फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर पोइट्री में होनी चाहिए। चौथा एग्रीमेंट ये है कि जेन्युइन पैशंस एक्सप्रेस होनी चाहिए पोइट्री में। पांचवा एग्रीमेंट ये है कि फिगरेटिव लैंग्वेज, ये जो पोएटिक डिक्शन है इसमें रिफॉर्म होना चाहिए और फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहिए, ये नेचुरल है। न्यू क्लासिकल ने थोड़ा सा डिसहारमोनियस इस्तेमाल किया है। डिसएग्रीमेंट पहले वाला ये है कि विलेजेस और विलेजेस का जो सब्जेक्ट मैटर है ये मुनासिब नहीं है पोइट्री के लिए। कॉलेज इसके खिलाफ है और इसने रीज़न बताई। नेक्स्ट वो कहता है कि लेक डिस्ट्रिक्ट के विलेजेस अलग हैं दूसरे विलेजेस से, तो आप ये इतलाक सारे पे नहीं कर सकते कि सारी पोइट्री में ये विलेजर्स होने चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट
लेक डिस्ट्रिक्ट के विलेजेस जो थे ये डिफरेंट थे, इसने इसको जनरलाइज किया इस पॉइंट को। तीसरा डिसएग्रीमेंट ये है कि वर्ड्सवर्थ ने कहा कि जो सिटी के लोग हैं डिसऑनेस्ट होते हैं, हिपोक्रेट होते हैं। कहता है ठीक है, ये क्वालिटी होगी उनमें, लेकिन विलेज लाइफ में अपनी मुश्किलात हैं, उनके जहन इतने डेवलप नहीं होते और बैकवर्ड होते हैं, एजुकेशन और सेंसिबिलिटी इनमें नहीं होती। चौथी चीज़ जिसके साथ वो डिसएग्री करता है वो ये है कि जो विलेजर्स हैं ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स ऑफ पोइट्री और इनकी लैंग्वेज, ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट ये प्रॉपर नहीं है। इनकी लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते कि इनके जो इनकी लैंग्वेज है, वर्ड्सवर्थ कहता है मैं इनकी लैंग्वेज में लिखूंगा और इस लैंग्वेज को मैं प्योरीफाई करूंगा। तो जब आप इसको प्योरीफाई करेंगे तो ये विलेजर्स की लैंग्वेज कहाँ रहेगी, ये तो फिर फिलोसॉफिकल लैंग्वेज हो जाएगी। और विलेजर्स के जो माइंड्स हैं ये चूंकि डेवलप नहीं होते, इनकी कन्वर्सेशन सिर्फ रिलीजियस चीज़ों के बारे में होती है, इन्होंने सिर्फ बाइबल सुना होता है। तो इस वजह से ये बात दुरुस्त नहीं है कि विलेजेस की लैंग्वेज जो है तो ये फिट है, सिविलाइज लोगों की लैंग्वेज फिट है सिटी लोगों की, क्योंकि सिटी के जो लोग हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं। जो गांव के लोग हैं वो ब्यूटीफुल चीज़ों के साथ कम्युनिकेट करते हैं वर्ड्सवर्थ के मुताबिक, और इनकी लैंग्वेज वहाँ से डिराइव होती है। तो कॉलेज कहता है कि ये कम्युनिकेशन जो होती है नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ, इसके लिए रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, गहरी सोच की ज़रूरत है, वो विलेजेस में नहीं होती। ये सेंसिबिलिटी अवेयरनेस उनमें नहीं होती। तो ये बात भी सही नहीं है कि उनकी लैंग्वेज वहाँ से डिराइव्ड है। पांचवी, मुख्तसर तौर पे कि मैं कॉमन लोगों की लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगा, वर्ड्सवर्थ ने कहा, कॉलेज ने कहा ये कॉमन लोगों की लैंग्वेज नहीं है पोएटिक लैंग्वेज, बल्कि मेटाफोरिकल लैंग्वेज होनी चाहिए इसके लिए। छठा ये है कि प्रोज में और पोइट्री की लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं है, वर्ड्सवर्थ का ख्याल है। कॉलेज कहता है ये बात तुम्हारी सही नहीं है, क्योंकि अगर हम तुम्हारी नज़म थॉन ले लें तो उसमें भी एग्रीमेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स डिफरेंट है, रिदम डिफरेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। We discussed the agreement and disagreements of college with Wordsworth. Thank you and good luck.